Assalamualaikum dear friends, this is Akil Aman and you are watching Magnet Learning. So this is a course run in Martin Primary School English Grammar and Composition में आज हम थर्ड यूनिट को रिज्यूम करने जा रहे हैं और उसमें आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 16 को. So chapter number 16 is all about the adjectives which are showing the quantity of nouns. In the nouns we see the quantity of person, place, thing or animals. So dear students, read the sentences given below. Number first one is we have enough money to last a week. Means enough is here is the word that is expressing about the money. Number second is he has a lot of money. A lot of is a word or a group of words that is showing the adjectives of quantity. In the third, there is some water in the bucket. And fourth one, there is a little hope of victory. Little is the in italics, so it's showing the adjectives of quantity here. Dear students, here you see some adjectives do not describe people or thing. They tell their number or amount. Now some adjectives do not describe, as we studied in the chapter number 15, that adjectives that were describing persons, places, things or animals. Here we see the adjectives which are only telling the number of these nouns, number or amount. So thus in the above 6 sentences, 6 तो नहीं है, यहाँ पर 4 हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है. 4 sentences, each noun has an adjective. ठीक है, हर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है. तो वो क्या बता रहा है कि हाउ मच, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो हाउ मच के साथ बनते हैं. जिस तरह हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हाउ ऑफ व्हाट काइंड बन रहा था, और न्यूमेरल में हाउ मेनी के साथ. तो क्वांटिटी में फिर हाउ मच के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं हम. Such adjectives which tell us how much are called adjectives of quantity. और इसको हम quantitative adjectives भी कहते हैं. Let us read some more examples here. Number first, a neighbor is asking for some flour. So ask the question how much flour and you get the answer some. इसी तरह सेकंड है, आई डोंट हैव मच टाइम टू आंसर योर क्यूरीज. यहाँ पर क्या है, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो हाउ मच टाइम, तो जवाब क्या मिलेगा आपको, नॉट मच, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में पढ़ा सेकंड में. थर्ड, यू हैव गिवन अ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन. अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मच एक्सप्लेनेशन, द आंसर यू गेट सफिशिएंट. नंबर 4, शी हैज़ लिटिल सेंस ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन. उसके बाद थोड़ा सेंस है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछें कि भाई कितना सेंस है, हाउ मच सेंस, द आंसर विल बी लिटिल. एंड इसी तरह नंबर 5, यू कैन टेक ऑल द ज्वेलरी. सो क्वेश्चन पूछा गया भाई कितनी ज्वेलरी, हाउ मच ज्वेलरी, तो आप आंसर देंगे ऑल द ज्वेलरी. सो इसी तरह एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हाउ मच के साथ हम बनाते हैं. यहाँ पर देखें, ऑल द एडजेक्टिव्स इन द अबव सेंटेंसेस आर आंसरिंग द क्वेश्चंस हाउ मच. हाउ मच के साथ ये सारे आंसर्स हम दे रहे हैं. ठीक, इसके क्वेश्चंस बना रहे हैं और उसके आंसर हाउ मच का हम क्या करेंगे, उस सेंस में देंगे. नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, इफ यू सी, एडजेक्टिव्स को पिक आउट करें, वो कौन से, क्वांटिटी को ज़ाहिर करें और नंबर को ज़ाहिर करें फॉलोइंग सेंटेंस में. जिस तरह देखें भाई, स्टेप बैक 3 पैसेज, कौन से कितने पैसेज, हाउ मच 3. नंबर 2, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स ऑलरेडी, कितने टाइम भाई, मेनी टाइम. थर्ड, आई स्पीक दीज फ्यू वर्ड्स टू ऑल मेन, फ्यू, ही इज 90 years of age. हाउ मच आर years of age, 90. Number 5th one is, did you get many marks? How many marks? Many. 6, he made several mistakes. So several here is the adjective. 7, he has no money. So no is the adjective. And all men wish to live long. All here is the adjective. And 9 number, Shahid made 90 runs. How many runs? 90.
تو یہاں پر نمبر میں ہم نے ٹوٹلی جو ایڈجیکٹوز نکالے ہیں وہ نمبر کے بارے میں نکالے ہیں، جو کوانٹٹی کو تو شو کرتے ہیں لیکن نمبر میں شو کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ایکسرسائز نمبر 2 کو، تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایڈجیکٹوز کو جس میں ہم نے کوالٹی اینڈ ایڈجیکٹوز آف کوانٹٹی یا نمبر کو کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نمبر فرسٹ سینٹینس دیکھیں بھائی، دیر ور سم پلیٹس آن دا ٹیبل. تو سم یہاں پر ایسی چیزوں کے لیے ہے جو پلیٹس ہم گن سکتے ہیں، تو یہ نمبر کو ظاہر کرتے ہیں. کوانٹٹی ایسی جو نمبر میں ہے. 2. Miss Kitty wore black shoes. Black hair is the adjective. 3rd. Peter helped the old man, and old is the adjective. 4. There were no biscuits in the tin. Now no is the adjective. Sentence number 5. King lifts the heavy box. Heavy is the adjective, and it is the adjective of quantity, means how much amount of box. So it is a heavy amount, heavy quantity. 6. All members of the Tabba family went to the theater. Now all members, all is the adjective here. 7. There is sufficient food for you. Sufficient is the adjective. Number 8. Barkat has enough money to buy the bed. Enough is the adjective here. Number 9. Lily has a long rope. So long is the adjective here. 10. He was kind enough to help me. Kind is here the adjective. Now 11. There is some water in the pot. Some is the adjective here. Number 12. Seema is a fast walker. So fast is the adjective here. Number 13. The Badshai Mosque is a beautiful monument. Now beautiful is the adjective here. 11. The girl has a lovely voice. Lovely is an adjective here. Number 15. I have some money in my purse. Some is the adjective of money. 16. You had to walk some distance. So some is the adjective here. Number 17. My grandmother was a wise woman. So wise is here the adjective that is used for the noun woman. So this is all about the adjective of quantity. Hope that you have understood this chapter. To do exercise yourself for these all exercises, write them on your copies and pick out or identify the nouns which are with the relevant adjectives. So you have to put out the adjectives from these exercises. So keep in touch with us, inshallah. In unit number 3 we will do in the next video. For chapter number 17 it is demonstrative adjective. So subscribe our channel, share it, and also comment all the videos, and also response us, and also cooperate us to motivate our videos and also viral our channel. So keep in touch with us and take care. Allah Hafiz.